Hello, I'm audible, everyone. I'm audible. So today we'll practice the questions of unit and dimension. Unit and dimension. Okay. So many concepts I have already covered all the concepts based on unit and dimension. You can go for past series and you can go there. See, some student adjust with my speed. Okay, there is no issue in it. Okay. Some student asks sir why you are going so fast and all. Okay, listen. Because दो तरह की बात होते हैं. Listen my points. Okay, carefully. I don't want to speak all this thing, but because you are asking these questions again and again, that's why I'm saying. Okay. एक चीज होता है ना. ओके देयर इज वन थिंग ना कि लगे रहो. ओके सालों साल तक लगे रहो, बच्चे को खुश रहो, तुम भी अपना खुश रहो, तुम्हारा भी काम चल रहा है, बच्चे का भी काम चल रहा है. ठीक है. देयर इज वन थिंग. अनदर अनदर थिंग होता है कि तुम्हारे पास भी टाइम लिमिटेड है और हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है. ओके तुमको भी प्रूव करना है, हमें भी प्रूव करना है ना. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा. ओके रैंक निकालना पड़ेगा. रैंक कब निकलेगी जब आप ओके अदर से बेटर कर रहे हो. स्पीड अपने यू विल वर्क ऑन योर स्पीड एक्यूरेसी कैलकुलेशन ऑल दिस थिंग. गेटिंग माय पॉइंट. ओके. So the student who do all these things, definitely they get scored. Okay, each year they do something good in life. Every year they go to good place, to good college and all these things. Okay. बाकी इधर क्या है ना, इधर देखो. अब मैं खुश करने के लिए है ना, मैं भी दो ही बातें कर सकता हूँ कि यार डू दिस एंड या बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी. बट यू डोंट नो बिकॉज यू डोंट नो द व्हाट्स हैपनिंग ऑल in okay different places. What's happening at different places. Okay. I'm giving you one examples. Okay. Try to understand my points. Okay. I'm giving you one examples. Okay. uh, there are hundreds of classroom goes on, hundreds of classroom going on. Okay. हर क्लासरूम में पांच पांच टीचर लगे हुए हैं. हर क्लासरूम में पांच पांच टीचर लगे हुए हैं, है ना. दिस इज टोटली डेडिकेटेड ओनली फॉर जेई एंड नीट. नथिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. देयर इज नथिंग टू take all this thing with any board examination. I'm not talking about board examination right now. Now listen, my friend. Okay, there are hundreds of classroom. Okay, goes on hundreds of classroom where five faculty, six faculties are working. Okay. See, I'm not blaming any faculty. I'm telling you I'm giving the answer of your questions or why you go so fast and all this. Listen, my friend, I'm not blaming here anyone. Okay. Everyone do their okay things according to their understanding, their point of view. Okay, everyone is correct. No one is wrong. Okay, now listen, my friend. Okay. अब यहाँ पर क्या है, हंड्रेड ऑफ क्लासरूम है. अब एक तो एक क्लासरूम में चलो मिनिमम मान लेते हैं अपन 30 स्टूडेंट तो मिनिमम रहते हैं एक क्लासरूम. तब एक क्लासरूम बनती है 20. चलो 20 मान लो. 20 स्टूडेंट, देयर 20 स्टूडेंट इन वन क्लासरूम. देयर आर ओके hundreds of classroom over there. 100 into 20, 100 into 20 कितने होते भाई. कैन यू हेल्प मी फॉर मल्टीप्लीकेशन. बताओ 2000 हो रहा है क्या, चेक कर लेना कैलकुलेशन. ठीक है. सो आई थिंक 2000 आउट ऑफ 2000 रिजल्ट कितने का होता है. डू यू नो द रियलिटी. डू यू नो द रियलिटी, है ना. डू यू नो द रियलिटी. रिजल्ट कितने का हो रहा है. So listen. All of want now like to talk very big things. Okay, and everyone want like to listen very big things. Okay, but no one want to face the reality. And if you don't want to face the reality, you cannot change the situation. Okay, and see this thing not happening. This thing happening by years and years of years. Okay, they all are doing by years of years of years. Okay, they are trying by 10 years, 20 years. You will not believe me. Okay, they are trying to create the result by 10 years, 20 years. Can you calculate the expenses and all this thing? But now what's happening? Out of 20,000, 5 results coming. Listen, 5 results coming. I'm telling you the points. Okay, now listen. Five results, 10 even this is very difficult. Some of the time this is difficult to create the results. Now listen my points. What's the benefit of doing all this? Tell me. What's the do cost analysis? You know the cost analysis. What's the benefit of putting all this money here? Tell me. What's the point? Are you getting my point? See, also I can make you happy, I can make you comfortable. Okay, so I can make you comfortable, there's no issue in it. Okay, but by being comfortable you can't solve the question. At the end, what's your purpose? Tell me. At the end, what's your purpose? At the end, your purpose is to solve question. Nothing is nothing is my students, my child. Okay, anyone who is listening me understand my concept, what I am saying. Irrespective of any benefit, I don't want any type of benefit. I'm unconditionally telling all this thing because I care for all of you. I care for even. See, listen, what can I say? I'm caring for everyone. See, something wrong is going on. You don't know why this wrong is going. So, suppose you're doing all this thing by 2 years. Okay, suppose you can say that 2 years goes on. Very classroom for only 2 years. So there are some okay 50 classroom, 60 classroom going on, and all this thing. People are working here. This thing not only going on by 2 years. You can say that it will take time, and with time you can create results. All this thing. That I can cope up with your student. But what's happening? You know, they are trying for 10 years, 20 years. 10 years they are trying to create a result. The result is not coming.
Are you getting a point? So at the end, what's the benefit of creating all this classroom? What's the benefit of doing all this thing? What's the benefit? Tell me now. Do you know some basic economics? Tell me where is cost analysis? Where at least out of suppose, okay, forget about what I did over here. 20 into 100 I did. Let's take approximation. Forget about this. Okay, I'm doing 20 into 50. Okay, 50 classroom. Even out of 1,000 students, you are not able to create even a 20 result. 50 results. Okay, so where is cost analysis? So what's the benefit? So actually what's happening, you don't know. Actually what's happening, these people don't know what's happening here. Okay, just everyone is surviving. Listen my points. Everyone is surviving just. Okay, and by surviving you cannot create results. Okay, you cannot create results. Then don't ask for results. Don't dream for rank. Don't dream for rank, and don't dream then you can beat the top organization who is top all over the country. You can't beat them. Okay, you can beat only by results. So don't dream now that you can just now you will be in the race with top 5 organization of our country. Not at all. You can't. Why? Because your way of working is not correct, and you don't want to improve it. Reason may be anything. So see, listen. So point of view is that okay. Again, I am repeating. Okay, I will not answer this question again and again. Okay, why? Listen my point. Here I am not. Here no. Here I am not make you too happy. Okay, make you too happy. Make you too happy. Listen. So see, reality is that you can't cope up with this. You can't cope up with the accuracy. You can't cope up with the concepts. See, you have to solve all questions at a time. It's not that I will give question from one chapter, you will come and solve question from there. You have to solve all questions, all chapters. 11, complete 12. J means all questions are coming at a time. So you have to solve all questions at a time now. You have to maintain the speed. Listen, my students, my friends, whoever is listening, okay? Whoever is listening. Whoever is listening. So see, here there another again come different theories. Listen, I don't want, again I already said I don't want to claim anyone. I don't want to blame anyone's. Everyone is correct their own place. Okay, everyone is correct their own place. Everyone is correct their own place. That's why they are doing, at least they are doing whatever they are doing. Maybe their purpose is different. You don't know. Okay, their purpose is different. Maybe their purpose is different. Their purpose is not to create result. Their purpose is different. So I even maybe I don't know their purpose. Okay, so listen. But my student, your purpose, you know your purpose, it's your life. You have to create a result. No, what's the benefit of putting 2 years and putting all this money and all this thing? Are you getting my point? So see, the changes is always very, very tough. Okay, that's why people want to be in that position. This is Newton's law. No, yeah, this is Newton's law. Newton's first law. This is from where we start the physics. People don't want to change the culture. People don't want to change the atmosphere. Okay, people want to be in their own comfort zones. Okay. So yeah, leave it, forget it, all this thing. Okay, yeah. Now come to the question. So I know today I'm going to discuss all the questions of unit dimensions. Okay, so yeah. चलो भाई, चलो तैयार हो तुम लोग? तैयार हो तब सब लोग? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, if U and U are the unit and physical quantity, N1 and N2 are the numericals value, then but the concept, let first discuss the concept. Okay, then we'll go for options and proper notes making. Okay, I already told you Nu equals to क्या होता है, constant होता है. I will not going to explain it again. Okay, यहाँ से क्या होता है, N1 equals to N2 U2. ठीक है, so from there you can solve the relation, find out the answers. Okay, let's come for notes making. Everyone come here. So this correct answer, this. Okay, so yeah. Say no need of making notes. Okay, simply we are doing all the questions based on critics concepts only. Right now there is no need of calculation. Okay, in this session so we'll try to avoid the calculations because these all questions are based on conceptual property. So this is very, very important for NEET exams point of view. Okay, this is very conceptual questions. Okay, this is very for NEET exams point of view, and it will also help the JEE student for concept clearance. Okay, for clearing the concepts. Okay, but very more beneficial for NEET students. Come here over here. Next question. So in MKS system, the unit of pressure is, can anyone tell me? Can anyone tell me? MKS system. Okay, can anyone help me? If I'm saying, suppose if I don't know anything, okay, about MKS, okay, I'm new to this unit system. So M is for meter, is this correct? Can anyone help me? And K is for kilogram, is this, am I correct? K is for kilogram and S is for second. All of you, am I correct? Now tell me what is the answer. What is the answer coming? What is the answer coming? What is the answer coming?
In MK system, the unit of pressure is. So what you are observing here, this is somewhat similar to SI unit. Can I say this is somewhat similar to SI unit? Can I say? Tell me, everyone. This is somewhat similar to SI unit. In SI unit also M for meter now, K for kilogram now, S for second now. Tell me, hey everyone, tell me yes or no. So if we are following somewhat, I'm giving just the tricks, okay? Otherwise we can go by methods and we can solve it and we can find out. Okay, SI unit is Pascal only because in SI unit also Pascal. Hello, 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 hello. Hey, all of you are getting my points. Tell me, everyone. Please make notes. Okay, I didn't add up over your proper notes. Okay, so don't worry about it. This okay. You can make your own notes properly because there is no calculation part. That's why I didn't add the calculative parts over here. Okay. Whenever there is calculation part, either I will solve it or I will add it over there so that you can easily make proper notes. Otherwise, okay, for your understanding point of view. Otherwise, because it takes too much of time for adding up and all this thing, and so you I hope all of you understood. Okay, yeah. Next question. Question number 3. I'm increasing the speed. So please pop up with me. Which of the following is not the unit of time? Hey, I'm not going to discuss this question. I'm not going to discuss this question. Yeah, but now here most of the students do mistakes even. Okay. Yeah. So yeah, whatever. When we talk about light years, most of the students do this mistake over here. Okay. So yeah. Clear, clear, clear. Question asking what which of the following is not the unit of time? Okay. Yeah, unit light year is what? Can anyone tell me what is light year? Is this mass? Tell him, is this mass or what is it? What is it? This is length. This is length. What is length? Distance traveled by light in 1 year. Distance traveled by light in 1 year. Is it correct? Am I correct? Yes or no? Yeah. Now moving for next question. अरे बोलो भाई न्यूटन पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ बताओ भाई इसका आंसर कौन कौन बताएगा बताओ इसको कैसे हैंडल करते हैं देखो न्यूटन क्या होता है फोर्स बाय मास क्या होता है एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर सेकंड माइनस 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन यहाँ पर है ऑप्शन देखते हैं बताओ अपना अपना सब लोग आंसर मैच करेगा भाई तो एक्सेलरेशन विल द आंसर नेक्स्ट मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पास्कलाइजेशन भाई मेरे को नहीं आता आई डोंट नो दिस क्वेश्चन प्लीज अरे listen, don't take this question lightly. Okay, this question comes in examination directly, so don't question this question. Don't take this question lightly. इस क्वेश्चन को कोई हल्के में नहीं लेगा भाई. पास्कल क्या है किसका यूनिट है? वो होता है भाई. चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम. ये तो पास्कल कभी हो ही नहीं सकता ना भाई. कोएफिशिएंट विस्कोसिटी F इक्वल्स टू क्या होता है? 6 बाई eta RV. So this is coefficient of viscosity. If you divide force by R into heat, now what is Pascal? So we need force by area. इधर से भी नहीं कोई अंदर जाने का भी जरूरत नहीं है ठीक है सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ये भी नहीं जाएगा भाई ये तो मेरे को गलत लग रहा है भाई एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सो व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ सो दिस इज सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड फोर्स स्ट्रेस स्ट्रेन बाय स्ट्रेन देखो इसका कोई यूनिट नहीं होता डेल्टा एल बाय एल का दिस इज द करेक्ट आंसर नो hey all of you understood the concept what I did over here आप लोग अपना अपना आंसर मैच करो बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is a unit of distance by I don't know this question please I don't know these questions okay everyone please answer this question parsec light year okay nautical mile ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है कोई गलत नहीं करेगा सारा सही है parsec भी क्या होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर में डिस्टेंस का यूनिट होता है नॉटिकल माइल में डिस्टेंस का यूनिट होता है एवरीवन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यूनिट यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर डायमीटर न्यूक्लियर एटम भाई ये जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाता मैं केमिस्ट्री बात कर रहा हूं मतलब जब एटम्स एंड न्यूक्लियर पढ़ाता तो वहां पर मैं बहुत बार इस वैल्यू को बोलता हूं रट लो भाई खासकर नीट वाले तो रट लो भाई क्योंकि क्वेश्चंस आ चुका है एम्स जब एग्जाम होता था एम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस भाई इसको कोई गलत नहीं करेगा भाई तो फर्मी इज द आंसर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला इज द स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं एटलीस्ट ये क्वेश्चन ओके प्लीज फॉरगिव मी व्हाट इज द आंसर ल्यूमिनस इंटेंसिटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई किलो केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ ओके एक बात बताओ भाई फोर्स है ना भाई फोर्स क्या होता है केजी ऐसे एनालिसिस करो केजी मीटर सेकेंड पावर -2 ऐसे ही तो सोचोगे भाई यहाँ पर क्या है ना सेकेंड पर पावर -1 है तो बेसिकली क्या कर दिया इसने फोर्स को क्या कर दिया टाइम से क्या क्या कर रहा हूँ मैं फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया क्या क्या मैं बोल सकता हूँ क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं एम आई राइट अगर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इंपल्स आएगा क्या भाई कुछ ऐसा सोचो भाई आंसर निकालो क्या आ रहा है आंसर भाई एवरीवन सो लीनियर मोमेंटम ऑप्शन में किया अपन के पास है ना तो लीनियर मोमेंटम हाँ तो इंपल्स क्या होता है चेंज इन एक वो बताओ इंपल्स क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम चेंज इन एंगुलर मोमेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ना इंपल्स ही तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब वी कैन गो विद ओके लीनियर मोमेंटम बोलो भाई अगर चलो भाई मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दिया भाई इसको आसानी से भी देख सकते हो भाई मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया लिमिट ये बहुत ज्यादा हो गया है ना तो देखो मास एंड ये क्या वेलोसिटी है तो लीनियर मोमेंटम बोलो भाई सही भाई चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है भाई उसके बाद अपन बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लेते फिर अपन बात करेंगे भाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, भाई क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा भाई। एक और तो किलोवाट, एक तो किलो भी दे रखा है, वाट भी दे रखा है, आर दे रखा है। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा पढ़ते रहते हैं क्या भाई? ये एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, कोई गलत नहीं करेगा भाई प्लीज यार। ओके, जो भी है कोई गलत नहीं करेगा, इस क्वेश्चन को बोलो भाई। तो क्या आंसर हो जाएगा? एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में तो एनर्जी की बात करते हैं भाई। चलो भाई, अब यहाँ पर अपन देखो भाई, अब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है? एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना? एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना? मैटर ये करता है कि तुम देखो एट द एंड व्हाट मैटर्स नाउ, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। देखो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। मैं तुम्हें क्वेश्चन, ओके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात को समझो यार। ओके, एट द एंड एवरीवन विल जज यू बेस्ड ऑन योर सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू आर गेटिंग रैंक। सिंपल सी बात। क्वेश्चन रैंक कहाँ से आता है? कोई तुम्हारा वहां पर ओके अंदर अंदर स्टेप्स तो हो नहीं रहा है। You to solve question, get rank, and go to top college, top place, wherever, whatever is your dream. Okay, whatever is your dream. Okay, so you do so questions. Okay, and if I'm coming to the class, I'm explaining the concept, whatever I'm writing over here, and by listening this, writing this, if you are able to solve this question, what do you want more? Tell me, tell me. But I am coming to the class, I am decorating whole class and whole day, night, and all this years. At the end, you are not able to solve the questions. What's the benefit of all this? Tell me what's you know the post analysis. What's the benefit of using all this thing? Tell me. But if I will tell the truth now, so people don't like to, they don't want to listen because people think that what they are doing, they are correct. That's why they never comes in a race. Okay, so if you want to come in a race now, you have to change yourself. You have to change your style with time. So many new organizations are coming. They are doing so good. Why? Because they just tick the exam, tick the market. Okay, they know the okay how to create product, how to produce product, how to hit the market. Yeah, come here, anyone. Next. Question number 11. Who will answer? 1 kilowatt hour is what? E question. I am not going to do it. Okay, you can do it easily. 33 to 10.5. Next question. The question which has no dimension but has unit. Why you everyone will do this question seriously? Don't take this question lightly. Okay. Constant. Listen. Constant which has no dimension but has unit. Okay. Unit. Okay. So Joule's constant. Because universal gravitational constant and gravitational constant and Rydberg constant all have okay, but has okay no dimensions but has unit. These have unit as well as dimension also. Now you can find out dimension also. You can find out dimension also. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Gravitational constant, you already know the dimension. Rydberg constant, you can also find the dimension of 1 by lambda. Yes or no? 1 by lambda means meter inverse comes there. So means L power minus 1 comes there. You can check it. So by this way you can. So this is good questions. Okay, you have to keep some things in your brain. Next question, I'm coming. Electron volt. Electron volt is the unit of. Tell me everyone. एक होता है यहाँ का बदलते तू कैसे सॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन वी इज वोल्ट। इसलिए हम क्या करें? क्यू इंटू वी, सो इंटू डब्ल्यू होता है भाई। गलत कर रहा हूँ क्या भाई? ये तो है भाई, है ना भाई? सो डब्ल्यू क्यू बी। बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शंस मैच करो भाई और आंसर बताओ भाई। तो डब्ल्यू तो वर्क एनर्जी होता है, एनर्जी का करेक्ट आंसर सही भाई। डब्ल्यू वर्क की तो एनर्जी कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो एनर्जी इज मास प्रेशर द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द सिस्टम। एनर्जी देखो, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो भाई। Energy is the given as this ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही सिस्टम। तो बताओ भाई, टेल मी वन थिंग भाई। अच्छा, न्यूटन के टर्म्स में लिखना है ना? पहले सारा ऑप्शन देख लिया अपन भाई, तो फिर अपन पता चला कुछ और डिस्कस करने किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट भाई, फिर अपन अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे किधर चलना है। या ये अपन के पास भाई बेसिकली, चलो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भाई? तो व्हाट आई एम सेइंग लिसन, मास इज केजी, तो कन्वर्ट भाई एक केजी आएगा, ठीक है? प्रेशर को क्या लिख सकते हो? फोर्स बाय एरिया लिख सकते हो भाई, फोर्स बाय एरिया लिख सकते हो भाई। बोलो भाई। तो फिर देखो यहाँ से न्यूटन भी आ गया, तो न्यूटन भी मिल गया तुमको, केजी भी मिल गया भाई। मैं सही कर रहा हूँ क्या भाई? एक ए ऑलरेडी दिया हुआ भाई। ए क्या होता है? एल के पावर 4 होता है भाई। एल के पावर 4 को क्या लिखते हो? मीटर का पावर 4 लिखते हो। ऊपर जाके क्या होगा? मीटर के पावर -4 हो जाएगा क्या भाई? बोलो चलो भाई, ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करते हैं भाई। अब बोलो भाई, बोलो भाई, आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है? करेक्ट आंसर क्या आ रहा है भाई? आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या आ रहा है भाई? आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है भाई? बोलो भाई। अपने नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दो भाई, नोट्स मेकिंग प्रॉपर्ली बनाते चलो भाई। आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या आ रहा है भाई? यहाँ से अपन के पास क्या आ रहा है भाई? यहाँ से अपन के पास क्या? केजी मीटर पावर -3 आ गया ना भाई? केजी मीटर पावर -3। अच्छा, एक सेकंड एवरीवन, हेलो हेलो, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर रखा है। तो मिस्टेक में आई मीन अगर ये क्वेश्चन होता तो जो अपन ने करा था ना, वो सही था, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दो, मास इंटू प्रेशर इंटू एनर्जी कर लो,
तो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इनटू एनर्जी, तो मिसप्रिंट हो गया है, टेंशन मत लो, एनर्जी की जगह फिर से एनर्जी का रख दो, तो फिर ये ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज जो अपन पहले करा था उससे जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंदर अंदर क्वेश्चन बताओ, सबको समझ में चीज है। क्वेश्चन नंबर 15, सुमन हॉर्स पावर इज इक्वल टू कौन, ये क्वेश्चन तो भाई मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे से नहीं आता है। 746 वाट, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी, भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा भाई। अच्छा यहाँ पर देखो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना, ये मत एक गए और जूल देखा, हाँ टिक कर गए और आकर के बहुत कुछ अरे मैंने सारा क्वेश्चन नहीं करा, सारा क्वेश्चन तुमने गलत करा क्वेश्चन। समझो इस सारी चीजों को, अपने मेंटल मेंटल साइकोलॉजी पे काम करो भाई, अपने साइको पे काम करो भाई, कि साइकोलॉजिकली कैसे हम ओके गलत करते क्वेश्चन को, है कि नहीं, हमें आता है चीजें छोड़ते हैं भाई, उस पर ही तो वर्क करना होता है भाई। एनीवे भाई इसीलिए हम ऐसे सेशंस ला रहे हैं कि भाई आपको हम हेल्प कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन अगेंस्ट स्मॉल किलोमीटर से द वैल्यू ऑफ एन, भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। अच्छा देखो इसका हिंट देता हूं भाई, एन है ना भाई, न्यूटन क्या होता है भाई, कोई बताएगा मेरे को, न्यूटन क्या होता है, मास, केजी, तो केजी क्या होता है भाई, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, केजी लिख दिया, देखो कैसे सोच रहा हूँ मैं, केजी, न्यूटन इंटू एक्सेलरेशन, तो इंटू मीटर, मीटर क्या 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, टाइम को लिखने की जरूरत नहीं होता भाई, टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाता है भाई, ठीक है भाई। ये देखो 10 के पावर इधर से क्या रहा 5, तो एन इंटू दिस इक्वल टू दिस, ओके, सो क्वेश्चन आस्किंग द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1, what is n from here? Is it come okay 10 power minus 5 or something else? Everyone, please see the options and do your own calculation and help me. What's answer coming? 10 power minus 5 is coming only. Okay. So now moving for next question. Speed is okay. Now again we are going to complete 10 more questions. Okay. Which are the following unit? No unit of work. भाई ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो नहीं, I don't know this question. Which are the following not the unit of work? Okay. What is the correct answer? भाई Newton second. Otherwise तुम कहोगे कैसे कैसे? तो force into displacement